वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अरब इस्लामिक समिट से खिताब में शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी और जंगी जराइम पर सहूनी रियासत का मुकम्मल मुआवजा करने का भी मुतालबा किया। My dear brothers and sisters, as the Ummah, we are bound by duty, by faith, and by our conscience to stand resolutely with the people of Palestine more than ever before. We must not let this systematic genocide and aggression persist. Therefore, this conference must call for 1. An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel. Lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity, and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. Accountability for Israel's war crimes. Pursue the adoption of UNGA's Emergency Special Session Resolution 10/24 that follows up historic advisory opinion by the ICJ. A comprehensive review of Israel's membership in the United Nations.